हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम। What is DES? DES is a data encryption standard. It is a block cipher. That is, it encrypts the data into 64 blocks. जो भी डेटा होता है उसको 64 blocks में encrypt करता है, divide करके encrypt करता है. So it is a symmetric algorithm as it uses the same algorithm and key for encryption and for decryption. So this algorithm is designed to encipher and decipher blocks of data consisting of 64 bits under control of a 64-bit key. Deciphering means must be accomplished by using the same key as for enciphering. Means encryption में की यूज हुई है वही की decryption में भी होगी, but with the schedule of addressing the key bits altered so that the deciphering process is the reverse of the enciphering process. ATM uses DES method. So the basic process consists of an initial permutation, which is IP, 16 rounds of complex key dependent calculation F, a final permutation being the inverse of IP. ये जो IP है उसका inverse. And function F can be described as L of I is equal to R of I minus 1, where R of I is equal to L of I minus 1 X or P of S of E of R of I minus 1 X or K of I. So this is a single iteration of DES algorithm, right? As of this equation here, it is a 32-bit. One part is of L, second part is for R. दोनों 32 बिट्स क्या है, उसका क्या X और ऑपरेशन होगा की के साथ. उसके बाद जो X और ऑपरेशन होगा वो ट्रांसफर होगा वापस 32 बिट. So this is the input and this is the output. So it is a single iteration of DES algorithm, right? Left here that the left output Li is simply copy of the right output, and here right output Ri is the exclusive OR of the left input L of I minus 1 and the right input R minus 1, and key for this stage is Ki. So in this stage, the substitution and permutation both function are used, right? This is the DES method. Here is the input, then initial permutation, right? So this key divided into 28 key, each of which is rotated left by a number of bits depending on the iteration number. ये एक iteration है, ये दूसरा iteration है, ये तीसरा iteration है. So ये R1 है, वो वापस से L2 is equal to R1 यहाँ पे. अब XOR के बाद आपको क्या मिलेगा R1, right? ये L1 plus F of R1 K1. अब ये R2 ये यूज होगा यहाँ पे. So total 16 bit तक होगा, right? So these shifted values serve as an input to the next iteration, right? ये जो हमको आंसर मिला ये इनपुट होगा नेक्स्ट इटरेशन का, इसका जो आंसर होगा ये इनपुट होगा नेक्स्ट इटरेशन का. So they also serve as an input to another permutation function which produces 48-bit output that serves as an input to the function. So the process of decryption with DES is essentially the same as the encryption process. So supertext जो है उसका यूज DES algorithm में as a input होता है, but use the keys Ki in the reverse program. So DES is normally used for personal and commercial applications like ATM. So
इंक्रिप्शन फंक्शन जो है DES इंक्रिप्शन, उसमें दो इनपुट्स होते हैं, प्लेन टेक्स्ट होता है, वो क्या होगा, इंक्रिप्टेड होगा, एंड की. सो द प्रोसेसिंग ऑफ द प्लेन टेक्स्ट जो है वो 3 फेज में होती है, राइट. एक होता है 64 बिट प्लेन टेक्स्ट which passes through an initial permutation IP that rearranges the bits to produce the permuted input, right. Then permuted output, right. So permuted output is then passed through 16 round and which involves both permutation and substitution functions. So the left and right halves from the last round are swept to produce the pre-output. Pre-output is passed through a permutation that is the inverse of the initial permutation function to produce the 64-bit cipher text. यहाँ से स्टार्ट होगा, कितने टोटल राउंड होंगे, 16 राउंड, राइट. हर एक राउंड में की के साथ एक्सओर ऑपरेशन होगा, ठीक है. उसके बाद फिर हमको वो डेटा मिलेगा, एन्क्रिप्टेड डेटा मिलेगा. सो ये जो राइट हैंड पोर्शन है, ठीक है, ये बता रहा है कि कौन सी 56 बिट्स यूज होगी यहाँ पे. So initially the keys is passed through the permutation function, right. So then the sub key, which is kj, this up to k16, right, is produced for each of the 16 rounds by combination of the lead circular shift and the permutation. After the permutation function is sent for each round, but a different key sub key is produced because of the repeated shifts of the key waves. राउंड 1 राउंड जो है हर बार एक नई की प्रोड्यूस होगी. ये फिर यहाँ पे दूसरा इटरेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट के बाद फिर से दूसरी की जनरेट होगी, वो यहाँ पे पास होगी. जैसे मैंने आगे बताया, इंक्रिप्शन में दो इनपुट्स, so this is the initial permutation and its inverse, which are defined by its tables. So ये टेबल है, उसमें कितने टोटल बिट्स है, 64 बिट्स है, 1 to 64, राइट. सो 64 एंट्रीज होगी परम्यूटेशन टेबल में, जिसमें क्या होगा, it contains a permutation of the numbers from 1 to 64, and each entry in the permutation table indicates the position of input bit in the output. So inverse permutation table nullifies the effect the initial permutation. ये इसका inverse है. तो जैसे मैंने बताया, it consists of 64 bits, contains a permutation number of numbers from 1 to 64, and each entry in the permutation table gives the position of an input bit in the output. So this figure shows the internal structure of a single round. ये दोनों 32 बिट्स के हाल से, राइट. ये 32 बिट्स, ये 32 बिट्स, ये 28 बिट्स एंड ये 28 बिट्स, राइट. सो यहाँ पे ये समराइज कैसे होगा, Li is equal to Ri minus 1, Ri is equal to Li minus 1, X or F or R minus 1 to Ki, right. ये पूरा जो
पोर्शन है, यहाँ पे राइट पोर्शन है आर, उसमें कहाँ पे होगा परम्यूटेशन होगा, जो भी एक्सपेंशन वो क्या है, ये 32 बिट इनपुट है, ठीक है, जो पहले एक्सपेंड कितने में होगा 48 बिट्स. So bits of the input are split into group of 4 bits, right? Each group is written as a group of 6 bits by taking the outer bits from the two adjacent group. उसके बाद क्या होगा, XOR ऑपरेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, then permutation. So each group is written as a group of 6 bits by taking the outer bits from the example. ये है वो एक्सपेंड किसमें हुआ, इसमें. So जो भी 48 बिट्स मिलेगी, ठीक है, वो XOR होगी की के साथ, जो की होगी उसके साथ, राइट. Now substitution S box. This 48-bit result is input to S boxes that perform a substitution on the input and produces 32-bit output. So it is easy to understand S box, right? जो 32 बिट है, ठीक है, वो एज अ इनपुट मिलेगी और आउटपुट क्या होगा इसका 48 बिट्स, और के आई जो की है उसकी 48 बिट्स के साथ एक्सओर होगा, उसके बाद ये डिवाइड होगा, ठीक है, और फाइनली जो कंप्यूटेशन मिलेगा दैट इज ऑफ 32 बिट्स. इनपुट 32 बिट्स का था, आउटपुट भी 32 बिट्स का होगा. So DES consists of a set of 8 S boxes, right? Each S box takes 6 bits as an input and produces 4 bits as an output. पहली एंड लास्ट बीट है इनपुट की, ठीक है. So the first and the last bits of the input box from a 2-bit binary number which gives the binary value of a row number, and the middle 4 bits selected one of the 16 columns. So the decimal value in the cell is selected by the row and column in that converted its 4-bit binary number to produce the output. For example, अगर S1 का इनपुट 101110 है, तो रो कौन सी होगी 10, ठीक है, और कॉलम कौन सी, कॉलम में से क्या लेना है 1101. फॉर एग्जाम्पल ये है 1011, सो 0111, वहाँ पे क्या है 11, सो रो कौन सी लेनी है 10, कॉलम कौन सा लेना है 0111, 0111, उसमें क्या है 11, आउटपुट क्या होगा 11, तो उसका बाइनरी क्या होगा 1011. So the permutation, the result मिलेगा, so the result is again permuted using the permutation table. Now key generation. So 64-bit किस लिए यूज होती है एज अ इनपुट टू द एल्गोरिथम, while only 56 bits are actually used. बाकी की बिट्स से वो यूज नहीं होती. एवरी 8th bit 64 में से 56 बिट्स यूज होती है, बाकी की जो 8 बिट है वो इग्नोर होती है. So the sum is at each round are generated. The key is the first permuted using the table named permuted choice. The resulting 56 bit is divided into 228 bit, right? C0 and D0, and each round CI1 and DI1 are separately subjected to a circular left shift or 1 or 2 bits. So their shifted values are forwarded to the next round. They are also input to the permutation table and permuted choice.
After then, table produces 48-bit output that serves as a round key KI. These are the alternate choice by 1, राइट. ये डिवाइड हो गया, ठीक है. फिर से ये जो डेटा मिलेगा की के साथ एन्क्रिप्शन के बाद हमको ये डेटा मिलेगा. दिस इज 1 2 3 4 अप टू 64 परम्यूटेड जो होगा उसके बाद इनिशियल परम्यूटेड के बाद ये 4 बिट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद हमको ये डेटा मिलेगा शेड्यूल फॉर दैट शिफ्ट. दिस इज अ राउंड नंबर. कितने राउंड्स हुए 16 बिट डेटा के वो कितनी बार बिट्स रोटेटेड हुई वो. DES encryption. So decryption in DES is same as a encryption except that the sub keys are used in a reverse order. जो 56 बिट है 56 बिट की उसका यूज क्या है. सो DES has been developed from Lucifer, which used 128-bit keys. So as a result, DES with only 56-bit key length is considered. मैंने जैसे बताया दूसरी 8 बिट है वो इग्नोर होती है. So only 56-bit key length is considered insecure, and devices have been proposed time and again showing that DES is no longer secure. The only non-linear part of DES is the S boxes, design of which was not made public. If someone is able to find weakness in S box, then attack on DES is possible. Right? So, characteristic of this algorithm can be exploited as an algorithm is based on linear functions. In this type of attack, the attacker exploits the fact that any algorithm takes different amount of time for different data. Suppose plain text हमारा ये है, right? की हमारी ये है, super text हमारा आपको ये मिलेगा using DES. So ये DES का एग्जाम्पल है, and in this consider some of its implications. So although you are not expected to replicate the example, right, you will find it informative to study the hex patterns that occurs from one step to the next. This table shows the plain text, key and the ciphertext. When we apply all the steps of DES, we will get this ciphertext. Thank you.